We all have seen six packs abs and we all love it. It's a fad not only amongst males but also in females. With growing healthy lifestyle people are adopting nowadays, six pack ab is a rage not only among young but also among all sections of the society. Six packs ab not only give you a big boost to your confidence, the way you look, the way you feel, and also the kind of fitted clothes you can wear really boost up your confidence. With the healthy lifestyle, people want to look good and also feel good, so they are wanting to have six packs ab. But sadly, most of us cannot achieve it with proper diet and exercise. This is where the surgery, which we call as the abdominal contouring surgery, helps. We all know about six packs ab surgery, but people who are looking for such surgeries do not know how they should go about, which center to choose, which expert to consult. So hello everyone, I am Dr. Deeksha Dikshit. I am a cosmetic and plastic surgeon, co-founder of DS Culprit Clinic at New Delhi. Today we will talk about this six pack ab surgery which people are wanting to know about. बहुत सारे ऐसे हमारे patients हैं जो आते हैं, they want to know about six packs ab but they don't know कि ये सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है, और प्री ऑपरेटिवली या बिफोर द सर्जरीज उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पोस्ट ऑपरेटिवली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए क्या क्या केयर करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट by discussing all these things one by one so that by the end of this video आपको एक proper जानकारी हो जाए and you are able to select the right kind of expert, the right center for your surgery and you are well prepared for your surgery beforehand. सर्जरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग होने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये जानें कि हाउ दीज सिक्स पैक्स एब्स आर फॉर्म्ड. तो पहले एक जनरल आपको मैं बताना चाहूँगी कि सिक्स पैक्स एब्स आर यूजुअली इंडेंटेशंस ऑफ योर अंडरलाइंग मसल बिलो द स्किन विच वी कॉल एज रेक्टस मसल्स. और बहुत से लोगों को जो कि बॉडी बिल्डिंग में या रिगरस एक्सरसाइज में है, दे ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो दिस रेक्टस मसल जो कि स्किन के नीचे होती है एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इज अटैच टू द स्किन. व्हेन यू डू लॉट ऑफ कोर एक्सरसाइजेज यू डेवलप दिस रेक्टस मसल एंड द फैट बिटवीन योर मसल एंड skin goes away. This muscle is more defined and it looks like packs or six packs ab, what we call as. ये indentations और deep हो जाती हैं when you do rigorous core muscle exercises and you define your rectus muscles more. Along with this indentation, it is very important to know कि जो हमारे abdomen का contour है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए so that ये muscle और define हो जाए. इन मसल्स के साइड में ग्रूव्स होते हैं जो विद एक्सरसाइज फर्दर डिफाइन होते हैं और एक मसल को एक प्रोजेक्टिंग और बल्जिंग अपीयरेंस देते हैं. द मोर योर मसल इज बल्ज्ड आउट, द मोर योर मसल इज फॉर्म्ड, द डीपर द इंडेंशंस और डीपर द ग्रूव्स विल बी फॉर्म्ड एंड यू विल गेट अ गुड सिक्स पैक्स एब. ये सिक्स पैक्स एब हम नॉर्मली नेचुरली बॉडी बिल्डर्स में जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं उनमें देखते हैं, बट इन जनरली ये सर्जिकली भी क्रिएट हो सकते हैं. कितने नेचुरली ये क्रिएट होते हैं डिपेंड अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ योर सर्जन एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ सेंटर एंड द फैसिलिटीज यू प्लान टू गेट योर सर्जरी डन फ्रॉम. द सर्जरी विच वी परफॉर्म for the six pack ab is known as high definition body contouring. This high definition body contouring surgery is a kind of high definition liposuction in which we artificially create these indentations so that आपको एक six pack ab का appearance मिल सके on the body when somebody looks at you. So what is high definition liposuction? It is a specialized kind of liposuction in which we do generalized liposuction first of your body to remove any excess fat जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अनवांटेड फैट डिपॉजिट हुआ है स्पेशली ओवर योर एब्डोमेन, जो कि हमारे को एक कॉन्टोर डिफाइन करने में हिंड्रेंस देता है, उसको पहले रिमूव किया जाता है. वंस वी रिमूव दैट एक्सेस फैट तो हम उस बॉडी कॉन्टोरिंग को हाई डेफिनेशन देने के लिए स्पेसिफिक कैनुलास के साथ वी क्रिएट इंडेंटेशंस बिलो योर स्किन इन बिटवीन योर मसल्स आर्टिफिशियली सो दैट आपको एक नेचुरल लुकिंग एब्स मिल सके. These abs are created
between your chest and your navel, depending upon the number of indentations, and also below your navel. It is equally important to know that apart from these indentations, हमें बाकी सारे abdomen को उन indentations के अलावा भी contour करना पड़ता है in alignment with rest of your muscles, जिनको हम oblique muscles कहते हैं, जो कि हमारे side of abdomen पे रहती हैं. This helps in giving further definition to your abdomen and also helps in highlighting your abs. So let us start how pre-operatively we consult the patient और क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है pre-operatively. When patient comes to us, हम उनसे उनकी problems discuss करते हैं. We listen to them कि उनके concern areas क्या हैं. उनकी proper हिस्ट्री और उनको प्रॉपरली सुनने के बाद वी एग्जामिन द पेशेंट एंड वी सी कि कहाँ कहाँ हमारे अनवांटेड फैट उनके डिपॉजिट हुए हैं जो कि हमें रिमूव करना है और किस तरीके से हम एक हाई डेफिनेशन बॉडी कॉन्टोरिंग रिजल्ट उनको दे सकते हैं. इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द मार्किंग्स ऑफ योर एब्स बिफोर हैंड बिफोर द सर्जरी विद योर सर्जन, सो दैट आपको एक जनरल आइडिया हो कि आपके पोस्ट ऑपरेटिवली कहाँ कहाँ इंडेंटेशंस आएंगे और कैसे कैसे वो क्रिएट होंगे और कैसे लगेंगे. टू हैव वेरी नेचुरल लुकिंग sets of abs, it is important to know that these abs are created in a very special way, and this can be created only by an expert who has extensive knowledge of how to create them. This is the role of a plastic surgeon, beautifully creating a six-pack ab. इसके अलावा after the pre-operative consultations, it is also important to know and have a general health checkup of your, in which pre-operatively the anesthetist checks you, and also certain pre-operative investigations that you are fit for the surgery. For the safety and the comfort of the patient, this procedure is usually done under general anesthesia so that आप comfortable हो throughout the procedure. For your safety, we advise that the patient should be kept overnight after the surgery so that आपका anesthesia से recovery smooth हो and we are able to observe you for 24 hours. So an overnight stay is advisable after this surgery. ये surgery usually 2 to 3 hours में complete हो जाती है on an average, and patient is usually comfortable after the surgery. Post operatively जो केयर होता है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है along with the surgery. Post operatively it is very important to wear specific kind of pressure garments along with foam compressions so that आपके indentations with time बहुत अच्छे develop हो जाए. इन indentations को आने में कुछ time लगता है, and for that time being patient compliance with pressure garment and foam compression is very important, along with proper follow-up under the supervision of your expert to know how you are faring after surgery and what all you need to add up or cut off after the surgery. So post-operative follow-up is equally important. You need to be under the guidance of your expert who has done the surgery. In post-operative follow-up, the expert also tells you how to start your exercise regime and how to carry out your normal daily work so that the result of your surgery is best and is long lasting, and it happens in a very natural way in which you are also comfortable. So post-operatively we have discussed what all needs to be done. This is a very life-changing surgery, and the result not only depends upon the expert, the center, but also on the compliance of the patient. So if you're looking for such surgery, please do look up your expert, the center you want to get, and it has all the facilities of anesthesia, proper nursing care and post-op care, and a proper follow-up, and the surgery which is performed under sterile and hygienic conditions. I hope you find this video useful. If you have any further queries regarding this procedure or any related procedures to liposuction or any other plastic surgery or cosmetic surgery procedure, you can always write to us on our YouTube channel. You can always search for related videos on our YouTube channel, and can follow us on our social media handle of Instagram by the name of DS Kalper. We would be really happy to help you with all your further queries. Thank you.